Algae general characteristics, they are thalloid organisms, not differentiated into root, stem, and leaves. Just like the bryophytes. Bryophytes and algae both are thalloid organisms, aquatic. Algae are aquatic organisms. But when we talk about the group algae, right? Even yesterday I told you it is not a taxonomical group, right? So it includes both unicellular and multicellular forms. Both unicellular and multicellular forms. The multicellular forms are included in the plant kingdom. The unicellular forms are included in प्रोटिस्टा. इसको हम इंक्लूड कर देते हैं प्रोटिस्टा में और इन्हें हम इंक्लूड कर देते हैं प्लांट में. The sex organs, this is characteristic. The sex organs are unicellular and non-jacketed. Unicellular and non-jacketed. They do not have any covering. It's a feature of algae only. In the other plants, Bryophyta to gymnosperms and angiosperms, all plants have jacketed sex organs and the sex organs are multicellular. They are avascular plants. They do not have conducting tissues. Avascular plants. Then they have distinct alternation of generations. Distinct alternation of generation. Alternation of generations. Now this term, alternation of generations, or this phrase, you can say, alternation of generation. This was given by Hofmeister, Hofmeister. बताया था Hofmeister ने बताया. ठीक है. Scientists who use this phrase alternation of generation. अभी आज ये चीज समझेंगे, अलग-अलग generations भी पढ़ेंगे और किस तरह से ये generations एक दूसरे के साथ alternate करती है. These generations are the gametophytic and sporophytic generations. These generations are mainly gametophyte and the sporophyte. The gametophyte, if I talk about, the gametophyte is haploid generation. It has just one set of chromosomes. It doesn't have two sets of chromosomes. Right? It is gametophyte. It produces gametes. It produces gametes. This is a definition of gametophyte. Gametophyte is a haploid generation which produces the gametes. Now the sporophyte. The sporophyte is the opposite. The sporophyte is a diploid generation. It is diploid and it produces spores. क्या बनाती होती है? Spores बनाती होती है. It produces spores.
these generations alternate with each other. Obviously स्पोरोफाइट में अगर मियोसिस हो गया और हैप्लॉइड स्पोर बना तो गेमिटोफाइट बन जाएगा, और गेमिटोफाइट क्योंकि गेमीट्स बना रहा है, because of the fusion of the gametes, this sporophytic generation would be formed, right? This alternation of generation phenomena gives rise to different types of life cycle. लाइफ साइकिल्स करके टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पेज नाउ. इसमें से किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई पूछ लीजिए. एक बार गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट कैसे समझा दोगे? गेमेटोफाइट इज हैप्लॉइड जनरेशन. हैप्लॉइड ऑफ जनरेशन. गेमेटोफिटिक जनरेशन क्या दो आप उसको? वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि हैप्लॉइड हैं और गेमीट्स बना रहे हैं, they would constitute the gametophytic generation. The group of organisms which are diploid and are producing spores, they are sporophytic generation. आपने pollen grain सुना होगा, है ना? Pollen grains होते हैं plants में. Okay. Flowers have anthers. The anthers produce the pollen grains. Yes, sir. Now pollen grains are produced by certain spores known as microspores. Microspores से बनते हैं, ठीक है? The microspore produces pollen grain, and the pollen grain in turn produces the gamete, right? But a cell before, just a minute, we move to the next slide. Within the anther of the flower. Sir, what did you exactly say? Pollen grain is produced by? Wait. Anther has microspore mother cells. Microspore mother cells. Now these microspore mother cells are diploids. They are diploid cells. Even the anther is diploid. Anther is a part of the stamen. The stamen is diploid. Stamen is arising from the flower. The flower is also diploid. It is diploid. Flower is developed on a plant, and the plant is also diploid. Now these diploid generations, or these diploid structures, would constitute the sporophytic generation. Now what happens from this? Microspore mother cell undergoes meiosis. अब इसमें meiosis होगा. अगर इसमें meiosis हो गया तो first haploid generation बन गई. ये first haploid generation क्या चीज है? It's a microspore. Microspore, right? इन सबको हमने क्या बोला? These are sporophytes, or these constitute the sporophytic generation. The cells of these parts, the cells of the plant, the cells of the flower, the cells of the stamen, the cells of the anther would constitute the sporophytic generations. Now, what is the definition of sporophytic generation? Sporophytic generation is a diploid generation which produces the spores. Right? The sporophytic generation produces the spores. देखिए आपके पीछे से डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है बेटा. Sorry. Right. The sporophytic generation is a diploid generation and it produces the spores. इनमें अल्टीमेटली क्या बन गया? प्लांट ने फ्लावर बनाया, फ्लावर से स्टेमन बना, स्टेमन से एंथर बना. तो अब एज सच ये सारी की सारी स्पोरोफिटिक जनरेशंस है क्योंकि डिप्लॉयड है. बट मोस्ट स्पेसिफिकली डिप्लॉयड जनरेशन कौन सी हुई?
ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसमें जिसमें मियोसिस हुआ और माइक्रोस्पोर बन गया। ये डिपेंड करता है आप किसी भी चीज को कितना डिटेल में पढ़ रहे हो। जूनियर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है प्लांट से पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं ना। अब दूसरी स्टोरी सुनते हैं। दिस डेवलप्स इनटू अ पॉलन ग्रेन, डेवलप्स इनटू a pollen grain. Now this is also haploid. एक haploid हो गया, दूसरा haploid हो गया. Now within this pollen grain, within this pollen grain, male gametes are produced. It gives rise to gametes. आप डायरेक्टली ये चीज कह सकते हो माइक्रोस्पोर से मेल गेमीट्स बनते हैं। थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफाई करने की कोशिश करोगे तो बोलोगे पॉलन ग्रेन से मेल गेमीट्स बनते हैं, या पॉलन ग्रेन्स में इनसाइड द पॉलन ग्रेन द मेल गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो अब ये दोनों जनरेशंस क्या हो जाती हैं? Now this is haploid generation, this is haploid generation. These are gametophytes और the gametophytic generation, जिसमें से more specifically precisely the pollen grain is the exact gametophytic generation. It's the gametophyte by its haploid and it is giving rise to the gametes. स्पोरोफाइट क्या होता है? डिप्लॉयड होना चाहिए और स्पोर्स बनाए, दो चीजें होनी चाहिए। गेमेटोफिटिक जनरेशन क्या होता है? हैप्लॉइड जनरेशन जो गेमीट्स बनाता है, राइट? दीज आर द टू जनरेशंस। अब ये मेल गेमीट्स है। नाउ दीस मेल गेमीट्स वुड फ्यूज विद द फीमेल गेमीट्स। दिस मेल gamete fused with the female gamete or the egg ovum. What will happen? Zygote is formed. Now the zygote is diploid. So this is also a sporophytic generation. Now this, let us suppose, developed into the embryo. It formed the embryo, and the embryo developed into the plant. The embryo is also diploid. Zygote, embryo, plant, flower, stamen, anther. All the cells of all these structures are diploid, and they constitute or comprise the sporophytic generation. Once the ploidy changes, there is a probability that some structure would produce the gametes. A haploid organism or haploid cell which produces the gametes is the gametophyte. Clear? एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज में नोट करते हैं। इसको कर दो नोट एक बार। I'm moving on to the next page now. Now, on the basis of habitat, we just discussed that most of the algae are aquatic, but it doesn't mean all are aquatic. They can be classified as aquatic and then terrestrial forms. Aquatic में भी algae are freshwater and marine. Marine का best example, the brown algae. It is basically the green algae which shows variety of the habitats.
right? The freshwater algae. Freshwater algae. Chlamydomonas volvox. Chlamydomonas volvox. Ulothrix स्पायरोगायरा. विकल्प पढ़े थे हमने. वॉलवॉक्स की कॉलोनी पड़ी थी कल हमने. सिनोबियम बोलते हैं उसे ना. And because this word algae includes bacteria as well. Nostoc, which is a blue-green algae, BGA. And oscillatoria, found in rice fields. Oscillatoria. These are all freshwater algae. यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी कैसी हैं? These are green algae. Right. Now, marine forms. इसमें ज्यादातर आपको ब्राउन एल्गी के नाम ही मिलते हैं. लेमिनेरिया, sargassum, ectocarpus, polysyphonia, right? The freshwater forms could be planktonic. Planktons बोलते हैं. PLANKTONS. Planktons. So ये planktons क्या होते हैं? The floating ones. They do not actively swim. These are the floating forms. Volvox. These usually float on the water. Right. Benthic. ये वर्ड्स सिर्फ प्लांट्स या सिर्फ एल्गी के लिए नहीं है. प्लैंक्टन्स हम एनिमल्स के लिए भी वर्ड यूज करते हैं. बेंथिक वर्ड एनिमल्स के लिए भी यूज किया जाता है. आपको इसका मतलब पता होना चाहिए. एनिमल किंगडम में वर्ड वापस रिपीट हो जाएगा. प्लैंक्टन्स द फ्लोटिंग फॉर्म्स. बेंथिक द बॉटम ड्वेलर्स. द बॉटम ड्वेलर्स. ठीक है. बॉटम ड्वेलर्स बिल्कुल नीचे. डायटम्स. डायटमीशियस अर्थ बनाते हैं. रेड एल्गी. अच्छा जी. मरीन एल्गी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है. मरीन एल्गी. एक तो बेंथिक होते हैं. ठीक है. बेंथिक. इसमें भी डायटम्स आते हैं. Diatoms would be included in this.
एक होते हैं ग्रीन एल्गी है, एक तो बिल्कुल बॉटम डिवेलप्स, और एक होते कोस्टल कोस्टल। Now these coastal forms are known as littoral, Littoral, littoral forms। ठीक है, आप इंटरटाइडल जोन कह सकते हो, जब हाई टाइड्स होते हैं तो वाटर राइज करेगा, जब लो टाइड्स होंगे तो वाटर रिसीड कर जाएगा। ठीक है, तो ये उस जोन में है जहाँ पे वाटर परमानेंट नहीं है, but the water comes and then it recedes down। So, I'm moving to the next slide। We would be discussing the terrestrial forms now। उसके examples पढ़ लेते हैं। Terrestrial forms, terrestrial। On the surface of soil, on the surface, on the soil surface, these are known as saprophytes। Saprophytes, the blue greens। ये photosynthetic भी होते हैं and they show saprotrophic nutrition as well, इसलिए हमें saprophytes कह देते हैं। Under the surface they remain hidden under the soil surface। अब आपको सरफेस पे नजर नहीं आएंगे, we call them crypto। Crypto means hidden, cryptophytes। These algae remain hidden। एग्जाम्पल, कुछ एल्गी डेजर्ट में भी मिलती है, एनिमल बॉडी पे भी मिलती है, ये पहले पढ़ाया जाता होता था, तो सब अपने को अब नहीं पढ़ना होता। एग्जाम्पल, Oscillatoria, but there is a species, Oscillatoria sancta, SANCTA, Oscillatoria sancta, ये species। Next, Vaucheria, VAUCHERIA, Vaucheria। ज्यादातर वाउचीरिया पे क्वेश्चन आता होता है। फॉलोइंग इज अ टेरेस्ट्रियल एल्गी, उसका नाम जो दिया होता है दैट इज वाउचीरिया। एग्जांपल जो दिया होता है, देन फ्रिट्शिएला, FRITSCHIELLA, Fritiella। Now this is the algae which is believed to have given rise to the bryophytes। It is related to origin of the bryophytes।
एक का नाम याद रख लो। इसमें भी दिस इज नोन फॉर द ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स। अदरवाइज बहुत चीजें तो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक एल्गी, symbiotic algae. Best example is chlorella. Chlorella. There is a chlorella which lives in the body wall of Hydra. उसका नाम होता है जू क्लोर हाइड्रा। एक क्लोरेला जू क्लोर हाइड्रा विरिडिसिमा। The hydra which appears green, right? The hydra which appears green because of the algae, Zoochlorella. Zoochlorella is the green algae which gives this hydra the green color. Zoochlorella. The hydra is zoochlorhydra. This is the best example. Association with fungi. Association with fungi. जिन लोग पहले पढ़ चुके हैं, a member of green algae gets associated with fungi. The structure formed is lichen. Right. Nostoc Gleocapsa, Gleocapsa, and Rivularia. These form lichens. Lichens अलग से एनसीईआरटी में टॉपिक भी है, छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। तो कुछ चीजें अपने से पूछी जा सकती है। These are the three genera. All of these three, Nostoc, Gleocapsa, and Rivularia, are blue-green algae. अब ग्रीन एल्गी में से बात करो तो ग्रीन एल्गी में एक ही वर्ड याद रखो, among the green algae, it's chlorella. यूजुअली जो सिम्बायोटिक एल्गी है वो कौन सी होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये हम ब्लू ग्रीन एल्गी में डिटेल में पढ़ चुके हैं सारा कुछ, तो बार बार इसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। We've studied this in studying blue green algae. नेक्स्ट पेज ओपन कर लें। हाँ जी बोलिए। तो पहला एग्जांपल सिम्बायोसिस वाला समझा दोगे? किस चीज का? ये सिम्बायोटिक एल्गी पहला वो क्लोरेला वाला एग्जांपल समझा दोगे? हाँ जी समझा दो। ये मान लीजिए ये हाइड्रा, ठीक है, ये हाइड्रा।
इसका माउथ, ये इसके टेंटिकल्स। हाइड्रा की बॉडी में 2 लेयर्स होती हैं। There's an outer layer, this is the outer layer, and then there is a layer of substances, बीच में substances हैं। उसके बाद इसके अंदर एक दूसरी लेयर होती है, then there is another layer. The body of the hydra is made up of 2 layers. Okay. Now the outer layer, let this be the outer layer. सेशन एंड होने वाला है, साथ साथ में आप नोट करते जाइए। The outer layer has got the algae. यहाँ पे algae है। The outer layer is the epidermis. Algae in epidermis. The hydra appears green. The hydra appears green. The algae is occurring in the intercellular spaces. एक सेल, ये दूसरा सेल, this is the algae.